The fourth trait or feature to define the living and the non-living, to differentiate between the ones, between living and non-living, differentiating between them, that is metabolism. How to define it? Sum total of all the chemical reactions, रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, in an organism, in a living being, they are called metabolism together. रासायनिक क्रियाओं को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म भाई, ठीक है, जो आपकी बॉडी में होती जा रही है. क्यों हो रही है भाई? क्रियाकलाप करने हैं, बहुत कुछ करना है, परिवहन करना है, खाना पीना है, लंबा होना है, बड़ा होना है, ठीक है, जनन, ये सब. तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का है भाई. एक तो बड़े वाले टुकड़े, लार्ज मॉलिक्यूल्स, छोटे में टूट रहे हैं, टुकड़े टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेकेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं. और ये देखें भाई, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े बड़े बन के दिखा रहे हैं. इसका मतलब जॉइनिंग हो रही है. सो दोनों में से कौन से वाले को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एक को कैटाबॉलिज्म. कौन से को क्या बोलेंगे? हाँ, काटापीटी, कैटाबॉलिज्म. याद रखो, काटापीटी, कट 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 कट. तो ब्रेक डाउन मतलब कैटाबॉलिज्म, ठीक है. वेयर एज जॉइनिंग मीन्स एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव, कुछ हो रहा है, जॉइनिंग हो रही है ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट इज एनाबॉलिज्म. ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. बोथ द two combined together, anabolism and catabolism together are called metabolism. So again we come to the differences between the living and the non-living beings, non-living things, and we have taken hold of metabolism this time, the trait. Energy, changes in energy, ये सब कहाँ मिलने वाला है? लिविंग में मिलेगा भाई, सीधा सीधा. ये एनर्जी चेंजेस दिखाते हैं, मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन दिखाते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, क्रियाएं दिखाते हैं करके. लेकिन कौन क्रियाएं नहीं दिखा रहा? नॉन लिविंग डू नॉट शो एनी सच रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और एनर्जी चेंजेस. नो, नॉट एट ऑल. दैट मीन्स नॉन लिविंग डू नॉट शो द ट्रेट, द फीचर ऑफ मेटाबॉलिज्म. Whereas who show? Living beings show metabolism. So is metabolism a very good feature? क्या ये बड़ा अच्छा फीचर है भाई? बड़ा परिभाषित करके दिखा रहा है लिविंग बींग्स को पूरी तरह से. हाँ, it is a very well defining feature of the living beings. They all show metabolism, small or large animals, organisms, plants, ठीक है, फंजाई, whatever. Whereas non-living things, all of them do not show, none of them show what? Energy changes or metabolism. So it is a very good feature to define living beings. What? Metabolism. Our fifth characteristic to differentiate between living and non-living is the cellular organization, right? As the name suggests, cellular. Who will have the cells out of the two, living or non-living? Living have cells. Cells show a group, and that group can be called a tissue. A group of tissues can be called an organ. A group of organs यानी अंग मिलके बनाते हैं तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम. जैसे है ना पाचक तंत्र, तो ऑर्गन सिस्टम. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मेक्स द इंडिविजुअल, दैट इज एनिमल और प्लांट. ठीक है, ये है लिविंग का क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल से बने हैं लेकिन ग्रुप बना के पूरा इंसान बना दिया, मल्टी सेलुलर बॉडी बना दी भाई. ठीक है, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इनमें सेल्स ही नहीं है भाई पहली बात तो ये क्या ग्रुपिंग करेंगे और क्या ऑर्गेनाइजेशन उनकी होगी? नहीं. इसका मतलब क्या? ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा अच्छा ट्रेट है, अच्छा फीचर है परिभाषित करने के लिए लिविंग को.
Yes, it is a very well defining characteristic or trait, because all living show cellular organization and none of the non-living, no or non-living object shows cellular organization. So it is a very good feature. What? Cellular organization. The differences between living and non-living. What about the growth, the first feature which we took to compare? Living show growth? Yes. Non-living show growth? No. But there are some non-living like the sand dune, remember, and the Retka Tila, remember, they are showing growth, the hill. So it is a non-defining trait. ठीक है. Okay, coming to reproduction. Do the living show reproduction? Yes. Do the non-living show reproduction? No. They do not reproduce. They reproduce what? Living. But are there any living who cannot reproduce? Yes. The worker bee, the mule, and some infertile couples I told about, they are examples of living who cannot reproduce. So it is also a non-defining trait. What? Reproduction. Third trait, that is consciousness. It is a very good trait, only found in the living, not at all found in the non-living. आपको याद होगा वो टेबल का एग्जाम्पल, मारे जाओ पीटे जाओ कुछ नहीं होने वाला. So it is a very well defining trait. It defines it properly. What? Living. ठीक है. Metabolism, only found in the living, not at all found in the non-living. So very good trait, and it can be called a well defining trait. Metabolism. ठीक है. It defines the living very well. Cellular organization, the structural organization of the multicellular animals, plants, found only in the living, not found in the non-living at all. It is also a very good trait, well defining trait of the living beings.